back to the Political Science lecture series on Napier. And today we're going to discuss the difference in the philosophy of Plato and Aristotle, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था. इस पे कभी कभी डिफरेंट तरीके से सवाल आते हैं, कंपैरिजन का सवाल आता है, कभी कभी एक बड़ी रिटोरिकल सी स्टेटमेंट आती है. एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स आस्किंग मी कि इस सवाल में क्या लिखना है. द स्टेटमेंट इज दैट एरिस्टोटल इज अ ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब ये है कि आपने वो डिफरेंसेस बताने हैं जो एरिस्टोटल और प्लेटो की फिलॉसफी में. सो लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन. अगेन इसमें जब भी सवाल अगर इस तरह आता है तो प्लेटो के ऊपर जो हमने चार्ट अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, पहले आप वो ड्रॉ करें, फिर एरिस्टोटल का जो चार्ट हमने कवर किया वो ड्रॉ करें. इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो फ्लो चार्ट दोनों के अलग ड्रॉ करें. So in the main body there are different differences and different aspects between Aristotle and Plato. The first is in, broadly speaking, in philosophy, their philosophical conceptions or their worldviews. So Plato was an idealist, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया. So his idealism was that he believed in the concepts of universal forms, जिसको वो theory of forms कहते हैं. ये हमने डिस्कस प्लेटो में नहीं किया था बिकॉज इसका पॉलिटिकल फिलोसफी से while there is a connection, but this was not the most important component. और पेपर में भी इससे कभी कभार शाज़-ओ-नादिर कोई बात आती है जो हम यहाँ कवर कर लेंगे. I'll also attach a video link to that effect कि ताकि आप इस पे particularly अगर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ लें. But the basic idea is कि if there is this pen which is black in color, this is not the real form of black. Plato thought that this is just a form of black. In actuality, black as a color exists in the abstract world. This black color only participates in the blackness, in the actual blackness to that effect. वही philosopher king वाला idea कि because philosophers are able to comprehend the real reality and the truth of everything, this world and everything in it is merely a form of that realness, जो कि उस prisoner को escape करके बाहर नजर आता है दुनिया में, जो कि आम बंदों को सिर्फ shadows नजर आ रही होती हैं. So whatever we are seeing from our senses, because again connect this with the idea that Plato was against empiricism. He believed कि senses deceive humans. तो हम जो empiricism यानी अपनी senses से जो चीज़ें देख रहे हैं, which is this black color, is not the real black. This is just a form of black. And जो philosopher होगा असल, according to Plato, he knows the actual black color in which this blackness participates. It's a very moral, abstract, spiritual idea. इसीलिए people in modern world have trouble making a connection to that effect, which is understandable. As against this Platonic idealism, you have Aristotelian empiricism. Again, Aristotle believed कि जो आपकी real world चीज़ें हैं, practically आपकी senses आपको दिखाती हैं, वो important होती हैं. वो direct observation से आपको reality का पता चलता है. ये moral reasoning और abstract reasoning के ज़रिए नहीं पता चलता. प्लेटो के नज़दीक rationalism, यानी कि अगर आप सिर्फ thought experiment करें, आप सिर्फ connections बनाएं, आर्म चेयर फिलोसोफाइजेशन भी इसको कह सकते हैं आप, कि आप आर्म चेयर पे बैठ के तो आप comprehend करने की चीज़ें को कोशिश करें without directly observing them, तो you, according to Plato, you can do that and you can reach truth. But according to Aristotle, he believed that direct observation is more important than armchair philosophization. Both of them, because both of them are philosophers, ancient Greek philosophy में mind की बहुत अहमियत थी, तो both of them believed in the superiority of mind over senses. However, difference was that Plato believed that senses could fool a person and we should not rely on senses. And philosophers, people who have their rational part as their most superior part, have their senses subordinate to their minds. और senses क्योंकि इंसान को गुमराह कर देती हैं. Again, क्योंकि वो prisoners senses के ज़रिए ही अपनी देखने की sense के ज़रिए shadows को real समझ रहे थे, लेकिन actual में वो नहीं थी. तो वो justify करता है Plato इसको इस तरीके से. But Aristotle believes that senses are needed in order to properly determine reality along with mind. In logic, Plato was Socratic, जिसको inductive method of reasoning कहते हैं. Socratic method ये था कि basically the idea of asking questions and different questions and then discovering the answer. So for instance, if a person asks me, why are you doing a particular thing? जैसे कि आप नेपियर का कोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो in a Socratic method, I will ask, why is teaching important? Why is CSS important? Why is CSS important using online platform?
तो आई एम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस जिनके जब दूसरा बंदा आंसर देगा तो ऑटोमेटिकली डिड्यूस होता जाएगा, उसके नतीजे में आंसर निकलता जाएगा. सो यू आर डिफरेंट पीपल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकाल के उनको आप आंसर करते हो. सो दैट्स द सोक्रेटिक मेथड. बिकॉज जिसका टीचर सुकरात था, सोक्रेटिस, ही यूज्ड दिस मेथड इन हिज ट्रेनिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज वेल, वन ऑफ विच हैपेंड टू बी प्लेटो हिमसेल्फ. इंडक्टिव मेथड ये होता है कि इसके अंदर आप बेसिकली यू स्टार्ट विद अ लार्जर आइडिया और आप लार्जर आइडिया से you start with a smaller idea, and you reach a larger idea. तो मैंने कुछ observations की छोटी मोटी and then I generalize it कि दुनिया में ये इसी तरीके से. So for instance, if I see 3 black pens in my life and I infer from this that all pen are black, that is inductive reasoning. कि मैंने एक छोटे subset को ऑब्जर्व किया या देखा या उसको समझा और उसको मैंने जनरलाइज कर दिया लार्जर सबसेट पे. सो फ्रॉम अ स्मॉलर सबसेट टू अ लार्जर सेट. एरिस्टोटल एज अगेंस्ट दिस was used scientific method and deductive reasoning. In deductive reasoning, you start with a larger set and reach a smaller conclusion. So for instance, अगर कहा जाता है कि someone stole this black pen from my house, तो then I start with a larger set कि how many people visited my house on that day. अच्छा, इतने लोगों ने किया, बट ये मेरा रूम लॉक था और इसकी चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है. तो अब हमने आहिस्ता से डिड्यूस कर लिया कि उस लार्जर सेट में से जितने भी लोग हैं उनमें से हमने इन 3 लोगों पे शक जा सकते हैं. अच्छा, इन 3 के पास चाबी थी लेकिन इनमें से जो 2 थे वो उस दिन शहर से बाहर थे, तो एक बंदा बचा, इसने चोरी की होगी. तो आपने एक लार्जर सेट से शुरू किया एंड यू एलिमिनेटेड ऑल द इम्पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड यू रीच the final plausible solution. That is called deductive reasoning. This is very similar to scientific method. Scientific method में भी एक आप hypotheses बनाते हैं, उस hypotheses में broad चीज़ें होती हैं, उस hypotheses के against आप direct observation करते हैं, experiment करते हैं. अगर आपके फिर results निकलते हैं, if those results conform to your hypotheses, तो आपको फिर उसकी वजह से conclusion निकलता है. इसको कहते हैं आपकी deductive reasoning. Scientific method. एरिस्टोटल ने सिलोजिज्म डेवलप किया था. एरिस्टोटल इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फॉर्मल लॉजिक. सिलोजिज्म इसका बेसिक यूनिट था लॉजिक का. वो क्या था? इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी. इसके लिए वो एक एग्जांपल यूज करता है दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, स्टेटमेंट नंबर 1. सेकंड, Socrates is a man, second statement. Third statement, hence Socrates is mortal. So it sounds very simplistic, बहुत हमें मतलब obvious लग रही है ये बात, लेकिन उसने ये basic unit of logic develop किया था that he used and applied on larger scale on scientific method in his analysis of other things. So that is his very important contribution to the philosophical world, that he introduced this concept of formal logic. Ethics के अंदर, morality के अंदर, प्लेटो के जो एथिक्स थे, प्लेटोनिक एथिक्स, ही बिलीव्ड कि नॉलेज जो है, अगेन सिंस ही इज आइडियलिस्टिक, सिंस ही प्रेफर्स माइंड, सिंस ही प्रेफर्स विजडम, तो उसके नज़दीक नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू एंड इट्स अ वर्च्यू दैट इज वर्थ एक्वायरिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ. नोइंग व्हाट इज गुड इज टू डू गुड. तो अगर आपको पता है कि सही चीज़ क्या है, अगर आपका नॉलेज है सही चीज़ पे, इफ यू मेक एन एफर्ट इन नोइंग द गुड, यू आर एक्चुअली डूइंग द गुड. उसकी असम्पशन थी कि नोइंग समथिंग विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन दैट बिहेवियर. तो अगर प्लेटो के नज़दीक ये मफरूज़ा था कि अगर आपको पता है कि एक चीज़ ठीक है तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ नेसेसरीली अपने एक्शन में भी ट्रांसलेट करोगे. हेंस बाय दैट लॉजिक ही कंक्लूडेड के इसीलिए अगर आपने किसी को अगर वर्चुअस बनाना है, अगर आपने किसी को सही बनाना है इंसान, तो आपको सिर्फ उसे सिखाना है कि सही क्या है. But Aristotelian ethics disagreed with them. He said that knowledge is not in and of itself. सिर्फ इस चीज़ का पता होना कि कोई चीज़ सही है गलत है will not automatically result in a right behavior, which obviously makes a lot of sense because oftentimes we and we see a lot of people who know the right thing but they don't do the right thing. So according to Aristotle, you need to create a system, you need to create a method कि जिसकी वजह से लोग over time practice के ज़रिए उनको सिखाया जाए कि प्रैक्टिस के ज़रिए एक्सरसाइज करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो दे डू द राइट थिंग. दे नोइंग समथिंग, knowing the right thing will not automatically result in right behavior. Again, similarly on the concept of virtue, Plato believed that wisdom is the basic virtue.
और विजडम जो है वो बाकी तमाम वर्चूज़ को कंबाइन करती है, बिकॉज अगर आपको की विजडम होगी, यानी विजडम है, तो आपको हर चीज़ का पता होगा कि अच्छी चीज़ें जितनी हैं दुनिया में वो क्या हैं, और आप वो सारी चीज़ें करेंगे. बट एरिस्टोटल बिलीव दैट विजडम इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड. इसके लिए बहुत एंड सेकेंडली इट डज नॉट end up unifying all other virtues as well. So a person needs to act wisely. Wisdom will be attained through effort, through practical work, again connected with Aristotle's realist philosophy. और अगर आप बाकी virtues को भी attain करने की कोशिश नहीं करेंगे तो they will remain out of reach. In science, Plato tried to do some work on geometry, physics and mathematics, but his work was more exploratory than it was practically applicable. तो इसकी real world implications काफ़ी कम थी. उसने astronomy और biology पे भी काम किया, but वो सारी चीज़ें पहले discuss हो चुकी थी. Didn't really contribute in expanding the body of knowledge. Aristotle, by contrast, is considered to be the first true scientist because he used this scientific method and deductive method जो हमने पहले discuss किया, जिसके अंदर hypothesis to observation and conclusion. His was the first attempt at classifying all forms of life in biology, zoology and botany. Medicine, geology और astronomy में भी जो है उसने काफ़ी contributions की. तो even though Aristotle की सारी discoveries over time reject हो गई, reject in the sense that वो they proved to be not completely true. However, उसने एक scientific basis रख दी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, कि जिसको पहले आने वाले scientists ने study किया, उसके ऊपर build किया, उसको फिर observe किया और उसको reject किया. But वो जो एक parameter और foundation Aristotle ने रखी थी, that really contributed to the body of knowledge. And for 1,000 years, as I said earlier, कि Aristotle की logic को defeat, Aristotle के claims को, Aristotle की study को, उसकी scientific studies को reject नहीं किया गया. So for 1,000 years, his conception of science reigned the world. In political theory, इनका क्या difference है? I have not written anything because ये we have already discovered in our previous lectures. So while Plato argues philosopher kings का idea, इसको आपने summarize करके, because the concept is very large. अगर comparison का सवाल है तो इसमें आपने ज़रा condense करके लिख देना है. Aristotle का classification का concept है of states. Plato का साथ communism है, और आपने यहाँ कंपैरिजन में बताना है कि एरिस्टोटल की क्या क्रिटिक थी उस कम्युनिज्म की, जो कि हमने डिस्कस की थी अपने लेक्चर में. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के डिफरेंस पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करके उसको इधर फिट करना है. इसके बाद आप वो फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करें दोनों के इंडिविजुअली, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स. अब इसको समराइज करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस इम्पॉर्टेंट पिक्चर. ये द स्कूल ऑफ एथेंस इस पेंटिंग का नाम है. इट्स अ वेरी वेरी फेमस पेंटिंग के बेसिकली प्लेटो की जो है एकेडमी, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, प्लेटो के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर. तो यहाँ पर प्लेटो, दिस इज प्लेटो एंड दिस इज एरिस्टोटल एंड दीज आर अदर मिनियंस, अदर स्टूडेंट्स दैट वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. तो इस पेंटिंग के अंदर ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि प्लेटो जो है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ इमेजरी है. सो यू सी प्लेटो का फिंगर इज पॉइंटेड अपवर्ड्स, which represents and symbolizes that Plato believes in the higher ideals, in idealism. He's talking about those lofty ideals of rational mind and philosopher king, or only philosophers are able to know the capital T truth. They are philosophers. और अगर हम अपनी intellectual capacities को hone करें तो हम wisdom achieve करते हैं, which is the highest virtue. So his is idealistic, hence pointing towards the sky, lofty ideals. Aristotle, by contrast, since he does not agree with the philosophy, इसका हाथ is pointing towards earth, its direction towards earth, because Aristotle's philosophy is more grounded, that it is not what is in the mind or its high philosophical ideals that matter, but how you choose to act practically on the ground. That is what matters. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अच्छी एक तस्वीर है, एक पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट करती है इन द डिफरेंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. तो इस पर मुख्तलिफ तरीके से सवाल आ सकते हैं, आपको क्लासिफिकेशन इनकी आ सकती है, डिफरेंट कंपैरिजन आ सकता है इनकी फ़िलोसफीज़ का, और साथ में वो स्टेटमेंट भी आ सकती है कि एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. उसमें भी आपने ये डिफरेंसेस लिखने. In the next lecture, we're going to discuss Machiavelli, who's a very, very important philosopher. See you guys next time.